Hello everyone, my name is Tanvi Sood and I am here to give my presentation on this SBI Multicap Fund. So SBI Mutual Fund comes up with this Multicap Fund. Earlier they haven't launched that type of fund, but this Multicap Fund NFO starts from 14th Feb and it will last till 28th February 2022. Although this is an open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap and small cap funds. अभी ये बंद तो हो जाएगा लेकिन फिर दोबारा से एसबीआई म्यूचुअल फंड्स फिर से अपना ये मल्टी कैप फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो फिर से रीओपन कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम. एज पर द रिस्कोमीटर बहुत वेरी हाई रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है and investors understand that their principals will be at very higher risk. So regarding the investment objective of the scheme is to provide investors with opportunities for long-term growth in capital from a diversified portfolio of equity and equity-related instruments across the market capitalization. However, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. अब यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड में जो एक्चुअली जो फंड मैनेजर है जो आपका SBI मल्टीकैप फंड आपकी पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो आपसे फंड्स लेंगे एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट पार्ट ऑफ इट इन अ for long-term purpose in a diversified portfolio. Diversified portfolio means that in a portfolio, the investment is going to be done in a large cap, in a mid cap, and in a small caps. And these caps are get determined as per the SEBI guidelines on the basis of the market capitalization, fully market capitalization. So SBI Mutual Funds has launched its SBI Multicap Fund, which is an open-ended equity scheme that will invest across the large, mid, and small cap companies. What exactly market caps means? These market caps, as you can see in a diagram, large cap जो है वो आपकी top 100 companies को cover करते हैं. फिर मिड कैप्स आती हैं, उसके अंदर आपके 101 to 250 कंपनी जो ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट में है, जिनका पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप्स तक पहुंच सकती हैं बट स्टिल दे आर इन समवेयर. और जो यंग कंपनीज, जो स्टार्टअप्स, जो थोड़े से इलिक्विड एंड वॉलेटाइल नेचर की कंपनीज हैं, वो आपकी बियॉन्ड 250 में आती हैं, मींस स्मॉल कैप में. इनको ऐसे रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे दी जाती है and that market capitalization is determined as per the SEBI guidelines. So earlier we have read about what market cap means. अब SBI has launched its multi-cap, so we should also know about the term multi-cap. So here it is in a large cap, mid cap, small cap. The fund manager is restricted to allocate the funds in large, mid, and small caps, at least 25%. Fund manager 25% से ज़्यादा कर सकता है वो invest in multi caps में, but इससे कम वो नहीं कर सकता because he is restricted. And other 25% of the funds made available for dynamic exposure for future opportunities. So 75% of the total fund would be get invested in these multi-caps, but the other 25 part is available with the fund manager itself to invest it in somewhere which gives the dynamic exposure. Means वो flexibility के through वो थोड़ा सा flexible issue है, तभी वो last में आपको diagram में दिख रहा है. And this fixed 25% of the allocation generates higher risk for the fund growth. As for making 25% allocations in each caps, fund managers sometimes purchases overvalued stocks. तो जब फंड मैनेजर के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसको 25% तो
हर कैप में इन्वेस्टमेंट करनी ही है, तो इससे जो फंड्स की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, फंड्स का जो पोर्टफोलियो होता है, उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है. एंड द रीजन ऑफ हाई रिस्किंग इज समवेयर रिजल्ट्स इन कि फंड मैनेजर को कई बार वो स्टॉक्स परचेज करने पड़ जाते हैं जो एक्चुअली ओवर वैल्यूड होते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है, दे नीड दो स्टॉक्स, और वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को वो ले जाते हैं. देन वी कम्स टू फंड फैक्ट्स. एसबीआई मल्टीकैप फंड्स जो है, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है. ये आपके कंप्लीटली आर श्रीनिवासन और मोहित जैन जो है, ये फंड मैनेजर हैं. दे कंबाइनली गोइंग टू monitor all these funds. SBI Multicap Fund has its standards to be measured against Nifty 500 Multicap 50 is to 25 is to 25 TRI index. अब निफ्टी 500 मल्टीकैप का रीजन ये है कि लेट्स गो अहेड विद द अदर स्लाइड फर्दर. See, if I compare the Nifty 500 multi-cap 50 is to 25 is to 25 TRI with Nifty 100, एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग निफ्टी 500 ने ज्यादा ग्रोथ देखी है और उसने ज्यादा रिटर्न्स को, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को अपनी तरफ लिया है. So Nifty 500 has somewhere performed really well, as you can see in 2018, in 2017, in 2020, 2021. तो निफ्टी 500 ने यहाँ पे काफी बेटर परफॉर्म किया है. एंड इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच शोज अस द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, तो यहाँ पे जो निफ्टी 500 मल्टी कैप है, उसने निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 100 के अकॉर्डिंग काफी स्टेबिलिटी शो करी है कि अगर मार्केट में कहीं ड्रैग डाउन आता है तो निफ्टी 500 ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई है. 2013 में इतना फॉल हुआ था, still Nifty 500 comes out with some stability with it, and as you can see in 2019 also, तो stability का result है कि downfall हुआ है but इतना नहीं हुआ है. somewhere it has the power to stop itself. So that's why Nifty 500 is taken into consideration as a benchmark against which these funds are going to be measured. This is a standard for measuring the funds. In simple words, I would say. Minimum application जो है, अगर आप लमसम दे रहे हैं तो it would be of 5,000. Minimum monthly SIP जो है वो minimum 500 होगी. Exit load जो है, it would be nil if units purchased or switched in from another scheme of the funds are redeemed or switched up to 10% of the units purchased or switched on or before 1 year from the date of allotment. जिस दिन आपको वो फंड्स आपको अलॉट हुए हैं, अगर आप उस डेट से विद इन एन ईयर आप अपने फंड्स को स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं, तो 10% आपकी यूनिट्स का 10% है उस तक का निल होगा. उससे ज्यादा के ऊपर आपको अपना एग्जिट लोड पे करना होगा. 1% of the application NAV if units purchased or switched in from another scheme of the fund are redeemed or switched out in excess of the limit on or before 1 year from the date of allotment. Nil if units purchased or switched in from another scheme of the funds are redeemed or switched out another 1 year from the date of allotment. So here we go with I have explained it to you, this one. So Nifty 500 और Nifty 100 का difference इस ग्राफ के थ्रू डिफाइन हो रहा है कि Nifty 500 जो है that is giving you a much better growth as compared to Nifty 100, and in maximum drag down graphs Nifty 500 has a capability to use its stability when it needs.
So next question arises is, should you need to invest in this multi-cap funds? So here are some answers. Avoid if you have flexi cap funds already. Flexi cap funds are those funds where the fund manager has flexibility when it comes to an investment. There is not as such restrictions as given in multi-cap funds that the fund manager has to invest 25 at least 25% of its fund in large cap, mid cap, and small cap. They had it. They had their own decision to invest for. तो अगर किसी के पास फ्लेक्सी कैप फंड्स पहले से ही इन्वेस्टर के पास, तो उसको मल्टी कैप फंड्स अवॉइड करने चाहिए. और सेकंड, इफ यू हैव प्योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स या अपने लार्ज कैप में अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको नीड नहीं है मल्टी कैप फंड्स की, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो भी वहीं इन्वेस्ट कर रही हैं. तो जब आपने पहले ही कर रखा है, देन well, otherwise it's up to you. New investors should wait and analyze its performance. Though it's an open-ended fund, अभी अगर बंद होता है तो कुछ टाइम के बाद फिर से कंपनी अपने मल्टी कैप फंड्स को रीओपन कर सकती है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. तो इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि परफॉर्मेंस सही जा रही है, so they can wait ahead and then decide whether they want to invest in these funds or not. They should wait a little bit. Last but not the least, if you want to diversify in your portfolio equally in large, mid, and small cap stocks, you have trust on SBI, then you can invest. अगर आपको SBI म्यूचुअल फंड्स या SBI सिंपली पे ट्रस्ट है, आपको उन पे ट्रस्ट है दैट कि what decision the fund manager going to take that would be effective and efficient for all the stakeholders, और आपको ये भी लगता है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, आपको लार्ज में भी इन्वेस्ट करना है, मिड स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट करना है इक्वली, तो you can go ahead with this multi-cap funds. So here is about to end of our presentation. Thank you so much for listening me out.